Assalamualaikum students. So in today's lecture we are going to cover the next topic of class first year biology, which is known as chromatography. So if we talk about the chromatography is basically a lab technique which is used to separate the component of a mixture. So basically जो chromatography है वो labs के अंदर use करती है. अगर हम specifically बात करें तो chemistry lab के अंदर और bio lab के अंदर ये बहुत ज़्यादा frequently use होती है. The reason is कि जो chromatography है it is very cheap. ये कोई बहुत ज़्यादा expensive नहीं होती, बहुत ज़्यादा cheap होती है. That's why and along with that it can be easily done. इसका जो process है वो बहुत ज़्यादा easy है. So because of these characteristics जो chromatography है वो lab के अंदर बहुत ज़्यादा use होती है, chemistry lab के अंदर and bio lab के अंदर. So if we talk about the chemistry lab, for the separation of organic compounds, and there are a lot of other compounds which can be separated by the chromatography in chemistry lab, but let's take an example of organic compound. So organic compounds are primarily composed of carbon and hydrogen, and we know that carbon has a capability of a catenation. So catenation को हम basically कहते हैं self linking ability of a carbon, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के साथ ही सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और दूसरे एटम्स के साथ भी ये मल्टीपल बॉन्डिंग्स कर सकता है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं it has variable number of carbons. So they can have 5 carbon, they can have 6 carbon, they can have 7, they can have up till 200 or thousands number of carbons. So to separate out these compounds chromatography can be used. So on the basis of their size, on the basis of their densities, on the basis of their polarities, they can be separate out. So similarly अगर हम बायो लैब के अंदर बात करें, so बायो लैब में हम लोग क्रोमेटोग्राफी को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं. Biology lab के अंदर in humans, animals and in plants we know that there are a lot of proteins, बहुत ज़्यादा proteins होती हैं हमारी body के अंदर, and all the proteins have a variable size. सब protein का बहुत ज़्यादा different sizes होते हैं. सब proteins के ऊपर जो charge होता है वो different होता है. There are some proteins which are polar, there are some proteins which are not polar. So to separate out these proteins we use chromatography. Similarly, if we talk about the amino acids, so we know that we have 20 to 25 different types of amino acids in our body. So to separate out these amino acids हम किसको use करते हैं, chromatography को use करते हैं. Similarly, in case of a plants we have photosynthetic pigments, जैसे ये chlorophyll A होता है, chlorophyll B होता है, carotenoids होते हैं. So to separate out these pigments we use the chromatography. So if we summarize it, chromatography is basically a lab technique which is used to separate out the components of a mixture के अंदर जो different components होते हैं उनको separate out करने के लिए हम लोग chromatography को use करते हैं. If we take an example, so amino acids की separation के लिए, proteins की separation के लिए, photosynthetic pigments की separation के लिए we use chromatography.
सो हियर इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये किया कि आपने फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्टिक ले ली, जो एक एंड था पेपर का, आपने उसको रोल करके यहाँ पे स्टैंड करवा लिया। आपने इस पेपर को पूरा का पूरा वेट नहीं करना, जो जिस चीज का आप लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, आपने पेपर को पूरा गीला नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने एक ड्रॉप मिक्सचर का गिराना है पेपर के एक एंडिंग के करीब, बिल्कुल एंड पे भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक एंडिंग के करीब। और उसका जो सेकेंड एंड होगा उसको आपने स्लाइटली डिप कर देना है इन द वाटर। जब आप उसको स्लाइटली डिप करोगे इन द वाटर, सो वाटर विल ट्रेवल अपवर्ड, बिकॉज वाटर की कैपेबिलिटी होती है कि वो मूव करता है ऑन अ पेपर। सो वो जो वाटर होगा विद द टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली वो मूव करेगा अपवर्ड, और फिर आपके पास डिफरेंट जो कलर्स हैं इस सॉल्यूशन के, उस मिक्सचर के, दे विल बी सेपरेट आउट। So earlier we have discussed one type of a chromatography, और उस chromatography में दो phases है। The very first phase is known as a stationary phase, जिसमें हम लोगों ने paper लिया था। So paper is a solid. So on the basis of a stationary phase, we can say that paper chromatography is a solid chromatography. And the second component of a paper chromatography was a mobile phase, और mobile phase के अंदर हम लोगों ने water लिया था, और वो जो water था that is obviously a liquid. So on the basis of our mobile phase we can say that it is a liquid chromatography. और paper chromatography के अंदर जो हमने mixture लिया था that was ink, और उस ink के अंदर जितने भी colors थे, all the colors molecules have their own size, they all have their own solubility in the water and in the water which is present in the stationary phase as well, and they all have their own polarity. So उनकी जो solubility है, उनका जो size है, उनकी जो polarity है, वो vary कर रहा था। So on the basis of that, एक paper के ऊपर जब उनकी partitioning हुई थी, that also varies. There were some color which were present at the top of a paper, for example orange one, and there were some colors which were present at the bottom of our papers, and there were some colors which was present in the center. So on the basis of that method, it was actually a partition chromatography. So chromatography ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है। On the basis of the mobile phase, on the basis of a stationary phase, on the basis of a method, we have a variable types of chromatography.